Welcome in this lecture. In this lecture, we'll talk about the Hamiltonian mechanics. We have learned the Lagrangian mechanics, and we know that for the Lagrangian mechanics, we need a generalized variable q and the time derivative of the generalized variable q dot. So the Lagrangian mechanics is a function of q dot and the time t. For the Hamiltonian mechanics, in the same way, we have a generalized coordinate q and the conjugate momentum of this generalized coordinate, that's the p, and again the time variable t. So the Hamiltonian is a function. Hamiltonian of the system is a function of q, p. The p is the momentum, generalized momentum, okay, and the t. So if you want to write a Hamiltonian of a system, it must be in the format of the q, p, and t, where q is the generalized coordinate, p is the conjugate momentum, and the t is the time. Now, the other difference between the Lagrangian mechanics and Hamiltonian mechanics is if you remember, the Lagrangian mechanics is the second order differential equation. Okay, it was a second order differential equation, but Hamiltonian mechanics is the first order differential equation, and how you will convert that we will learn later. So, if in a somehow we can convert our Lagrangian system into Hamiltonian system, okay. So let us. I have a Lagrangian in the format of q dot and t, and if I convert this Lagrangian to the Hamiltonian, that is the function of the q, p, and t, then this transformation we consider as a Legendre transformation. Okay, so basically a Lagrangian to Hamiltonian transformation. So we learn what is the Hamiltonian mechanics is now. Okay, so if we know the Lagrangian, we can calculate the Hamiltonian of the system for the non-conservative system. For a conservative system, it's nothing but the total energy of the system. If you remember, for a conservative system, your Lagrangian was L is equal to T minus V. But for a conservative system, my Hamiltonian is nothing but the T plus V. And that's the total energy, kinetic energy plus potential, that's the total energy of the system. And if you saw what the conservative means, is where the energy is conserved. For a conservative system, Hamiltonian is nothing but the total energy of the system. Okay. For non-conservative system, your Hamiltonian can be calculated by using this mathematical formula. That is Hamiltonian function of QPT is equal to summation QI dot PI, okay, minus LQ Q dot T. So you know the Lagrangian. These are the generalized coordinate. Then you can calculate the Hamiltonian. This is for the non-conservative system. So by this way, we can calculate the Hamiltonian. And if you ask what is the Hamiltonian now, now you realize that the Hamiltonian is nothing but the total energy of the system. It's a total energy of the system. Okay. So we have learned the Lagrangian equation. We have learned the Lagrangian equation that we know that this what was that. So that is d by dt of del L by del Q dot minus del L by del Q, and that should be equal to 0. Okay, so this was the Lagrangian equation. Now if you show the Hamiltonian canonical equation of motion in the terms of Lagrangian,
that will be given by in this way. You can calculate the qi dot, okay, and you can calculate the pi dot. Since h is a function of q and p, okay, and also the t, the remaining parameter is q dot and p dot, that we can calculate. So q dot you can calculate by del h by del pi, and pi dot you can calculate by del h by del qi with negative sign. And also the Hamiltonian and Lagrangian are related by the del h by del t is equal to minus del L by del t. Now you can see that Hamiltonian is the just a second order differential equation. Hamiltonian is the just a second order differential equation. Sorry, first order differential equation. So what happened? Now see that here are the first one differential equation, and then you have a second differential equation. So if you have an n generalized coordinates, then you will have a 2n first order differential equations in the Hamiltonian system. Whereas in the Lagrangian, it will have a n second order differential equation. That's the difference between Hamiltonian and Lagrangian of the system. Okay. Now we'll see the properties of the Hamiltonian of the system. Okay. So if Hamiltonian is a not explicit function of time, okay. So what we want to say, if h is not the explicit function of time, and in this case the Hamiltonian will be the constant of the motion. Okay, so it will be the constant for the system. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब पहले समझते हैं कि what is the explicit function and the implicit function. ठीक है? So if h is not the explicit function of time, इसका मतलब हुआ कि हम h को टाइम के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में नहीं लिख पाएंगे. So यह संभव नहीं होगा कि हम h को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख पाए. ठीक है? t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो h को हम t इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के टर्म में नहीं लिख पाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो del h by del t 0 हो जाएगा. ठीक है? एंड देन दिस विल बी द कांस्टेंट ऑफ मोशन. सिमिलरली ये आपका, इसको आपको प्रूफ इसका आपको करना होगा. लैग्रेंजियन भी अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम है नहीं है, तो इसका मतलब लैग्रेंजियन भी आपका जो है, लैग्रेंजियन को भी या सिस्टम के लैग्रेंजियन को भी आप इस तरीके से नहीं ले सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट फंक्शन टाइम के रूप में उसको लिख सके. देन आल्सो देन देयर विल बी del L by del t is equal to 0. सी होगा क्या है, जैसे मान लीजिए आप y को x का फंक्शन लिखते हैं, x इंडिपेंडेंट फंक्शन है, तो y एट द फंक्शन ऑफ x आप जब लिखते हैं तो ये हो गया 4x square minus 2x something. Now you can find that del y by del x. ठीक है? इवन के 4x x square z भी हुआ तो भी आपको del y by del x निकाल लेंगे. लेकिन अगर आप y को इंडिपेंडेंट फंक्शन x के रूप में लिख ही नहीं सकते तो x कहीं आएगा ही नहीं, तो नहीं आएगा, del y by del x 0 हो जाएगा. सिमिलर केस यहाँ पे है. तो अगर हैमिल्टोनियन टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है तो वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा. लैग्रेंजियन नहीं है तो लैग्रेंजियन कांस्टेंट ऑफ मोशन हो जाएगा. और अगर जो आपका पोटेंशियल है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके सिस्टम का जो पोटेंशियल है वो पोजीशन डिपेंडेंट हुआ, ठीक है, अगर वो पोजीशन डिपेंडेंट हुआ, वो पोटेंशियल जो है अगर वो फंक्शन आर पे, पोटेंशियल जो आर पोजीशन का फंक्शन हुआ, एंड इसका मतलब वेलोसिटी इंडिपेंडेंट हो, आर पे पोजीशन पे डिपेंड करे लेकिन वेलोसिटी पे डिपेंड ना करे. ठीक है? इसका मतलब ये भी हुआ, अगर ये कंडीशन बनेगा, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो हैमिल्टोनियन है आपके टोटल सिस्टम की, ठीक है, वही आपकी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी. और ये कंजर्वेटिव सिस्टम का कंडीशन है. कंजर्वेटिव सिस्टम में आपका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? पोजीशन डिपेंडेंट होता है. जो पोटेंशियल हुआ आपका वो फंक्शन इट्स डिपेंड्स ऑन द पोजीशन. ठीक है?
इन दैट केस योर हैमिल्टोनियन विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो हमने अभी पढ़ा था। तो इस तरीके से आपके हैमिल्टोनियन सिस्टम के आपने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी कि अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है तो हैमिल्टोनियन का कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, अगर लैग्रेंजियन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है तो हैमिल्टोनियन कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, और अगर पोटेंशियल जो टाइम डिपेंडेंट पोजीशन डिपेंडेंट हो गया तो जो है आपका जो हैमिल्टोनियन हुआ उसी को आप सिस्टम ऑफ द एनर्जी कहते हैं। तो एक और पॉइंट क्लियर करते चलिए कि आप हमेशा हैमिल्टोनियन को सिस्टम ऑफ द एनर्जी नहीं कह सकते हैं, सॉरी एनर्जी ऑफ द सिस्टम नहीं कह सकते। वो एनर्जी ऑफ द सिस्टम कब होगा, जब आपका पोटेंशियल कंजर्वेटिव सिस्टम हो, या आप उसको कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो हो वो पोजीशन डिपेंडेंट होगा। ओके, जैसे साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़ा लैग्रेंजियन में, लैग्रेंजियन में साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हमने किसको कहा, जो कि एब्सेंट था। इसका मतलब अगर मैं कोई लैग्रेंजियन लेता हूं, मेरे कई सारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं Q1 Q2 Q3, और मेरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट Q5 नहीं है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, इसका मतलब जो Q5 हो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है L के लिए, करस्पॉन्डिंग मोमेंटम जो होगा कंजर्व होगा। ठीक है, यहां भी आपका वही कहा जा रहा है कि अगर कोई जनरलाइज कोऑर्डिनेट है जो कि लैग्रेंजियन में साइक्लिक था तो हैमिल्टोनियन में भी साइक्लिक होगा। अगर कोई जनरलाइज कोऑर्डिनेट अगर वो लैग्रेंजियन में साइक्लिक था, ठीक है, तो हैमिल्टोनियन में भी साइक्लिक होगा। आप यहां से देख सकते हैं, आप सिंपल जब हैमिल्टोनियन को लैग्रेंजियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तब देखिए, आप देखिए इस पूरे सिस्टम में आप देख समझिए कि अगर मान लीजिए इस पूरे सिस्टम में Q5 नहीं है, तो इसमें Q5 है नहीं, यहां तो Q डॉट आ गया है, तो Q5 आएगा, यानी Q5 डॉट आएगा लेकिन Q5 नहीं आएगा। तो आप जब हैमिल्टोनियन लिख रहे होंगे तो Q5 अगेन नहीं आएगा, इसका मतलब Q5 साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो गया। तो जो लैग्रेंजियन में साइक्लिक होगा वही हैमिल्टोनियन में भी साइक्लिक होगा। और साइक्लिक होगा तो होगा क्या, आपने वहां देखा कि अगर साइक्लिक कोई कोऑर्डिनेट जो है वो लैग्रेंजियन कोऑर्डिनेट साइक्लिक, सॉरी लैग्रेंजियन में कोई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट साइक्लिक है तो उसका कंजुगेट मोमेंटम कंजर्व था। हैमिल्टोनियन और जो लैग्रेंजियन में होगा उसको हैमिल्टोनियन में भी साइक्लिक होगा, इसका मतलब यहां भी कंजुगेट मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक है हैमिल्टोनियन एच में, ठीक है, हैमिल्टोनियन सिस्टम ऑफ द एच, जो सिस्टम का हैमिल्टोनियन है, तो उसका कंजुगेट मोमेंटम क्या होगा, वो कंजर्व्ड होगा। ठीक है, तो जो भी कंजर्वेशन लॉज आपके एग्जिस्ट कर रहे थे लैग्रेंजियन में वो एग्जैक्टली फॉलो होंगे हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन में भी। जब हम कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स और सिमेट्री ऑपरेशंस की बात कर रहे थे वो हमारे हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन में भी एग्जिस्ट करेगा। सो बाय दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, कि कैसे आप किसी सिस्टम का हैमिल्टोनियन निकालेंगे, ठीक है, और उस हैमिल्टोनियन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, कब उसको हम टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहेंगे। Next class we will deal with the some problems how to get the Hamiltonian of the some system, Lagrangian of the system and Hamiltonian of the system. Thank you.